अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं पे स्टक हो जाते हैं। समटाइम कहीं से भी उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पा रही होती, या अगर मेरे साथ वो टाइम लॉक करते हैं तो मे बी वो 2 दिन का या 3 दिन के बाद का टाइम मिल रहा होता है और उनको क्विक हेल्प चाहिए होती है। मैं आपको बताता हूं कि आपने फौरी तौर पे अगर हेल्प लेनी है तो कैसे ले लेंगे। ये मेरे सामने एक रिपोर्ट खुली हुई है जिसका नाम है मंथली रिपोर्ट, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मुझे ये करना है कि मुझे मंथली रिपोर्ट के किसी भी जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करूंगा। मैं बिल्कुल लुकर स्टूडियो के अंदर न्यू हूं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक नया टैब ओपन करूंगा। इसी में मैं नया टैब इसलिए ओपन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को साथ साथ ये चीजें नजर भी आती रहें। अच्छा, उसका नाम उसमें मैं सर्च करूंगा गूगल एआई स्टूडियो। ये आप याद कर लें इस एआई टूल का नाम, और ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। अब गूगल एआई स्टूडियो के अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने गूगल एआई स्टूडियो को साइन इन कर लेना है विद जीमेल। जो भी जीमेल जिससे आप लॉगिन है उसी के साथ आप इसको साइन इन कर लें। जब आप साइन इन कर लेंगे तो उसके बाद आपने जेमिनाई के साथ इसको स्टार्ट करना है। और इसमें लेटेस्ट इस पर 2.0 आ रही है। ये फ्री है। सबसे पहली चीज ये है, इसमें कोई पैसे नहीं है। एपीआई की भी आपको फ्री में मिल जाती है। आप प्रॉम्प्ट लिख के भी इससे पूछ सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली चैट जीपीटी या किसी और टूल से, जेमिनाई वगैरह से पूछते हैं। अ, लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि अगर आप स्टीम रियल टाइम पे क्लिक करें तो फिर ये आपको 3 ऑप्शन देता है। या आप इससे बोल के बात करें, या आप वीडियो शेयर करें इसको। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई बुक पड़ी है और बुक के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा, और आप वीडियो के साथ इसको दिखा देते हैं कैमरे के ऊपर कि ये मेरा मैथ का सवाल है, मुझे ये बताओ कैसे होगा। तो वहां से देख के आपको ये उसका सोल्यूशन दे देगा। या जैसे अब लैपटॉप के ऊपर मुझे चाहिए ये मसला हल, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूंगा। मैं स्क्रीन शेयर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर टैब को शेयर कर दूंगा। अब ये वो टैब है जिसके ऊपर मुझे वर्क करना है। मैंने ये टैब शेयर कर दिया। आई थिंक मैंने गलत शेयरिंग Okay, कर दी you're है। planning. ये मैंने वेबसाइट शेयर कर दी है, मुझे रिपोर्ट शेयर करनी थी। हम वापस चलते हैं यहाँ पे और इसको स्टॉप करके दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ से टैब मंथली रिपोर्ट। Okay, so you want to select the monthly report tab. या Is that correct? करेक्ट। कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ आई कैन एडिट दिस रिपोर्ट? Sure, I can help with that. You can click the edit button on the top right corner of the page to edit the report. Would you like me to guide you further? Yeah, sure. Can you please let me know in which software this report was built? Certainly, the software used to build this report is called Predictive Minds. Do you need more information? I don't think it. Predictive Mind is a company name, but I want to know the uh, reporting software in which this report was built. Okay, the reporting software that was used to build this report is called Looker Studio. Okay, Does okay, that got answer it. your question? Yeah, yeah, sure. Okay, can you please let me know if I want to add uh, drop down for date control? How I can do that? Sure. You could add a date control by first selecting the Add a Control button in the top panel, and then selecting Date Range Control. Would you like to know the next steps? Date range control. There you go. Okay, well, thank you. One more thing, can you please Great. let me know how I can add conditional formatting on ADR? ADR is a card actually. I have just selected this card. Okay, to add conditional formatting to the ADR card, you need to go to the Style tab for that card. Okay, I Then, have you clicked can on find that. the What's the next? Great. Click on Add with Click the Add button next to conditional formatting to add a new rule. Okay, I have clicked on this. Okay, now you can choose a color type and then define a format rule based on a condition. I will What go condition with would you like to single color. Okay, a single color is selected. Now select the condition you want to use for your formatting. I will say greater than uh,
या ग्रेटर देन 75. Okay, set addition to greater than. Now, set the input value to 75 and then select a color for the formatting. I will say green, textile. Okay, choose a color for the text style. Fine. Then I have to save it or cancel it. Yes, now you can either save the changes or cancel them. ओके. अच्छा, मुझे ना इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे उर्दू या हिंदी में बता दें कि ये जो नीचे चार्ट ऐड किया हुआ है, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, रेवेन्यू PARYOY, ये किस कौन सा चार्ट इसको कहते हैं, इसका नाम क्या है? Sure, no problem. The chart you have selected is a column chart called Rev Par Yoi, which stands for Revenue per Available Room Year over Year. Would you नहीं, like to know anything else? नहीं, नहीं, मुझे उर्दू में बताया ना, इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आया. लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती? I understand. Unfortunately, I'm unable to change the language of my responses. I can, however, keep my answers short and easy to understand, so do let me know. How can I help? Okay, thank you very much. I will let you know. I will get back to you once I need some other support. तो भाई लोग, इस गूगल AI स्टूडियो को अभी अपने सिस्टम में यूज़ करना शुरू कर दो. आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं. सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा. अब ये देखें, ये इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आपके पास आ रही है. इसको कर लें आप यहाँ पे पिन, और जब जब ज़रूरत पड़ती है इसको यूज़ करते रहें. बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. AI को यूज़ करें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए. AI से घबराएं नहीं, AI से परेशान ना हो.